हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech Simplified। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है। मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 4 की, जिसमें हम आज 25 MCQs आपको प्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। और ये काफी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो कि गेट टेस्ट और इंजीनियरिंग एग्जाम के सिलसिले में आपके लिए डेवलप किए गए हैं। सो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की जानिब, जहां पे आपको आज का लेक्चर प्रेजेंट किया जाएगा। तो आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पार्ट 4, जिसमें हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रेजेंट करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 76, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। 77, विच ऑफ दीज इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सा है जो डिसएडवांटेज नहीं है बल्कि एडवांटेज है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का? ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट, ऑप्शन बी क्वालिटी ऑफ वर्क इज enhanced, ऑप्शन सी डिफिकल्ट टू फिक्स responsibilities, ऑप्शन डी हाई ओवरहेड कॉस्ट। सो बी जो है दैट इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी ऑफ वर्क इज enhanced। 78, what are the advantages of matrix organization? Option A removes weaknesses of line and staff organization, option B quick response to changes, option C higher administrative cost, option D better balance between time cost and performance। So C जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, higher administrative cost। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का ये एक एडवांटेज है। Who is the key responsible person in pure project organization? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या की पर्सनल है वो प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर। किसी भी प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में पीएम जो है वो मोस्ट की रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 80, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर? प्लानिंग, ऑप्शन बी डिजाइनिंग, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन डी डायरेक्टिंग। सो बी जो है डिजाइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पहले का एक सब्जेक्ट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्टिंग ये जो है उसकी की रोल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। सो बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। 81, व्हिच क्वालिटीज शुड अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर possess? ऑप्शन ए लीडरशिप, ऑप्शन बी इंटेग्रिटी, ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ these qualities should a good project manager possess? Leadership, integrity, knowledge of construction, option D all of the above। So D is the correct option, all of the above। Construction manager should have dash skills, option A technical skills, option B conceptual skills, option C adaptability, option D all of the above। So D is the correct option, all of the above। Construction manager को है टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल स्किल्स भी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो ये तमाम उसकी स्किल्स हैं। 83, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर? इनमें से कौन सी है जो प्रोजेक्ट फेलियर की कॉजेज नहीं है? ऑप्शन ए इम्प्रॉपर प्लानिंग, ऑप्शन बी पुअर वेदर कंडीशंस, ऑप्शन सी लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ऑप्शन डी डिफेक्टिव स्ट्रक्चरल डिजाइन। सो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 83 का। 84, विच वन ऑफ the following is not an excavating and moving type of equipment? Option A bulldozer, option B clamshell, option C scraper, option D dump truck। So dump truck जो है वो excavation और movement equipment नहीं है। So D is the correct option। 85, in resource leveling dash, option A total duration of project is reduced, option B total duration of project is increased, option C uniform demand of resources is achieved, option D cost of project is controlled। So resource leveling में uniform demand of resources can be achieved। C is the correct option। 86, sinking fund is dash, option A the fund for rebuilding a structure when its economic life is over, option B raised to meet maintenance cost, option C the total sum to be paid to the municipal authorities by the tenants, option D a part of money kept in reserve for providing additional resources and structural modifications। So sinking fund जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की जो लाइफ ओवर हो जाती है और उसको हमने
रीबिल्ड करना होता है उसके लिए यूज होता है. So A is the correct option. 87. During the construction period, price variation clause in contracts caters to dash option A increase in rates of only imported materials. Option B variation in cost in material element, labor element, and petrol or lubricant element. Option C variation in total cost of the project on an ad hoc basis. एंड ऑप्शन डी रेट ऑफ इन्फ्लेशन. सो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड प्राइस वेरिएशन जो है वो हमने मटेरियल्स के ऊपर भी देनी होती है, लेबर कॉस्ट के ऊपर भी और पीओएल के ऊपर भी. सो बी इज द करेक्ट. सो बी हियर इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरिएशन इन कॉस्ट इन मटेरियल एलिमेंट, लेबर एलिमेंट एंड पीओएल एलिमेंट. क्वेश्चन 88. द टाइम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ऑप्शन ए क्रैश टाइम, ऑप्शन बी नॉर्मल टाइम, ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्शन बी बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए जो टाइम है वो नॉर्मल टाइम से क्रैश टाइम के दरमियान है. 89. In the critical path method of construction planning, free float can be dash. Consider the following statement: greater than total float, B greater than independent float, 3 equal to total float, option 4 less than independent float. Of these statements, option A 1 and 4 are correct, option B 2 and 3 are correct, option C 1 and 4 are correct, and option D 1 and 2 are correct. So B is the correct option. Statement number 2 and 3 are correct, and 2 is greater than independent float and equal to total float. So B here is the correct option. Question 90. Grader is used mainly for dash. Option A trimming and finishing, option B shaping and trimming, option C finishing and shaping, option D finishing, shaping and trimming. So yes, all these activities are managed by grader. Finishing, shaping and trimming is the correct option. 91. The most suitable type of equipment for compaction of cohesive soil is option A smooth wheeled roller, option B vibratory rollers, option C sheep foot roller, option D dampers. So sheep foot roller is used to compact the cohesive soils. C is the correct option. 92. The basic action involved in sheep foot roller is option A kneading, option B pressing, option C tamping, option D vibration. So kneading is done with the help of sheep foot roller. A is the correct option. 93. Preliminary project report for a road project must contain option A the detailed estimated cost based on detailed design. So preliminary है तो detailed designing अभी नहीं हुई. Option B the several alternatives of project that have been considered. Option C the soil survey, traffic survey, concept design and approximate cost. Option D the contract document for inviting tenders. So C is the correct option. Preliminary कॉस्ट रिपोर्ट के अंदर सॉइल की जो सर्वे रिपोर्ट है या सॉइल बेयरिंग टेस्ट वगैरह हैं वो लगते हैं, ट्रैफिक स्टडी की जाती है, कॉन्सेप्ट डिजाइन और एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट. सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ डैश. ऑप्शन ए कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरिजन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, इकोनॉमिक्स ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. सो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ ऑप्शन सी change in output due to change in input. So C is the correct option. 95. Wheeled tractors are replacing crawler tractors because option A wheeled tractors travel faster, crawler tractors are more expensive, track parts of a crawler wear out quickly, crawler tractors have stick control. So C is the correct option. 1, 2 and 3 are correct. Wheel tractors travel faster, crawler tractors are more expensive, and track parts of a crawler tractors wear out quickly. 96. In the time cost optimization using CPM method for network analysis, crashing of activities along the critical path is done starting with activity having option A longest duration, option B highest cost slope, option C least cost slope and option D shortest duration. तो इसका आंसर है least cost slope. क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी सीपीएम में जो क्रिटिकल पाथ के साथ है वो लीस्ट कॉस्ट स्लोप. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द रेटेड loads of lifting cranes as percentage of tipping load at specified radius, crawler mounted and pneumatic tire mounted machines would be respectively option D 75 and 83. Option A was 80 to 90, option B 90 से 80, 90 and 80, 85 and 75, D 75 and 83. So D
जो है वो करेक्ट ऑप्शन है 75 से 83 तक। बैचिंग रेफर्स टू, बैचिंग क्या होती है? कंट्रोलिंग द total quality at each batch. Option B, weighing accurately the quantity of each material of a job before mixing, controlling the quantity of each material into each batch and adjusting the weight to be added in each batch according to the moisture content of materials being mixed in a batch. So C जो है वो correct option है। बैचिंग में कंट्रोल किया जाता है quantities of each material into each batch, हर बैच के लिए कितना आपने मटेरियल डालना है उसको कंट्रोल करते हैं, इसको बैचिंग कहा जाता है। 99 फॉर एक्सकवेटिंग यूटिलिटी ट्रेंचेस प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डेप्थ the excavation equipment used is option A hoe, option B shovel, option B drag line, option D none of the above. To control the precise depth, hoe जो है वो यूज होता है excavation में। 100 in the bar chart planning dash consider the following statements. Option A, interdependence of operations cannot be portrayed, progress of work can be measured, spare time of activities can be determined, schedule cannot be updated. So A is 1, 2, 3 are correct. B 1 and 4 are correct. Option C 2, 3 and 4 are correct. Option D 1, 2 and 4 are correct. So B is the correct option. 1 and 2 are correct. And 1 is interdependence of operations cannot be portrayed. And 4 is schedule cannot be updated. बार चार्ट के ऊपर schedule update नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पार्ट 4 ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सीरीज आपको प्रेजेंट किया। इसमें हमने 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको शो किए और उनकी एक्सप्लेनेशन भी हमने एक्सप्लेन की, प्रेजेंट की इन सिंप्लीफाइड मैनर। आई होप आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होगी। इन वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, प्लस सिफ्ट सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।